दोस्तों, जैसा आपने मेरी पुरानी वीडियो जगलिंग वाली देखी होगी, तो मैंने सोचा अब मैं कोई नई स्किल सीखता हूँ। और रिसेंटली यूट्यूब पे मैंने एक नई चीज़ देखी है, तो लेट मी शो यू द वीडियो ऑफ वोल्टेल्यून। तो ये देख के आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ डॉटेड लाइंस, जो ये बनाते हैं ट्र ऐसा करके बोर्ड पे। तो somehow I have this and I will do this activity. I will learn this skill. This is day 1, hour 0. Let's do it, guys. So let's try. एक्चुअली मैं उस साउंड के आसपास भी साउंड नहीं कर रहा हूँ, उनका साउंड होता है टर इस टाइप का, और मेरा अभी सो आई नीड टू प्रैक्टिस दिस। लेट मी सी दिस अगेन। ओके, सो ही इज जस्ट कीपिंग हिज हैंड्स लाइक दिस। You can see this, थोड़ा थोड़ा अभी ये नजर आने लगा है। So let's practice this. Oh, yeah. काफी अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी काफी डिफरेंस है, बट आई थिंक दिस इज द ट्रिक कि आपको इसको इस तरीके से सीधा रखना है, एंड या तो ये बन जाएगा या टूट जाएगा। It is working for me 50% of the times. I need to practice even more. इस टाइप का तो साउंड आने लगेगा तब तक। This was close enough. Oh. That sound is very fast and this is very slow. Started coming. Woo! Look at this.
इसको सीख चुका हूँ और मैं इसका यूज़ करके आपको बताता हूँ किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी। हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? एक सेकेंड, बेइज्जती हो गई।